Welcome to Inside India. This is Shekinah bringing you the latest updates and insights across the nation. Let's get started. In Kolkata, a protest rally organized by the Doctors Forum and various associations took place, demanding justice for the Arjika rape and murder case. Participants, including medical professionals and community members, gathered to voice the outrage over the heinous crime and call for swifter action from the authorities. Holding placards and chanting slogans, the protesters emphasized the need for safety and justice for the victims of violence. The rally highlighted the collective demand for accountability and support for the survivors, underscoring the urgent need for systemic changes to ensure the protection of women and marginalized communities in society. The event aimed to raise awareness and foster solidarity in the fight against such atrocities. Check. English. What's your demand? Our demands, from very inception, we are demanding justice for Arjika or justice for Avaya. Still, we are holding such demand. We are here to hold our solidarity and to get justice in favor of Arjika incident, in favor of the victim. And we are protesting here. We gathered here to raise our hands, to demonstrate our protest for justice for Arjika or justice for Avaya. You know very well, against the investigation, people raise their objection that the government, including the state government, including their police authority, are not doing investigation properly. That's why court handed over the investigation to the CBI. But actually they are giving the rubber stamp in the investigation of the state police. We believe their investigation also not doing properly. They are not doing investigation legally. That's why we gathered here. My name is Sheikh. I am an advocate of Calcutta High Court and a worker of Legal Service Center. In Raipur, Chhattisgarh, Kirtan Rathod, the additional superintendent of police rural, addressed the tragic case of a 3-year-old child murdered in Sadhu area. Rathod expressed deep sorrow over the incident and assured the community that a thorough investigation is underway to bring the perpetrators to justice. He emphasized the importance of community cooperation in aiding the investigation and ensuring the safety of children. The shocking nature of the crime has left the local residents in grief, prompting calls for heightened security measures and awareness to protect the most vulnerable members of society. Rathod's commitment to resolving the case aims to restore a sense of security within the community during this distressing time. विधानसभा थाना क्षेत्र में लगभग 4 बजे एक सूचना आई थी और जिसपे थाना क्षेत्र के जो सड्डू कॉलोनी के पास जो वीआईपी कॉलोनी है वहाँ का एक जो 3 साल का बच्चा पूणे मार करने करके वो घर से सुबह 10 बजे से लापता है करके और जिसकी सूचना मिलने पर तत्काल थाना प्रभारी द्वारा मौके पर उपस्थित हुआ था और सीएसपी भी गए थे। आसपास के जो जगह है उस पर पता तलाश किया गया जिसमें पता चला कि वो उसका जो घर का जो गाँव जहाँ के रहने वाले हैं वो पलारी क्षेत्र के वहाँ के उसका जो चाचा का बेटा था उसके साथ वो घूम रहा था। इस संबंध में तस्दीक किया गया, आसपास जो कि नाले भी थे और पानी भरा था तो इसलिए किसी प्रकार की अनहोनी न हो इसको ध्यान में रखते हुए थाना प्रभारी और उसके पूरे टीम के द्वारा आसपास के जो गड्ढे हैं, पानी के जो स्रोत हैं और अन्य जितने भी संभावित जगह है उसमें दिन भर प्रयास किए गए थे खोजने के। इस दौरान किसी प्रकार का बच्चा का पता नहीं चला, जिसके बाद फिर
जो लड़का है जिसके साथ वो बच्चा खेल रहा था उसके संबंध में जानकारी मिला तो उससे पूछताछ किए तो पता चला कि उसके द्वारा उसको मार दिया गया और क्या बोलते हैं झाड़ी पे दिया गया था। आज इसकी सूचना मिलने पर तत्काल जो है थाना प्रभारी गए थे और बच्चे के बॉडी को रिकवर कर लिए हैं और किस कारण से मारे हैं और क्या है रीजन अभी जो सुबह भी पीएम होगा पंचनामा होगा, आगे पूछताछ पर क्लियर हो पाएगा। सिर्फ उसको डिटेन किया गया और निश्चित रूप वो जो बच्चा है जो नाबालिग जो वो भी नाबालिग ही है जिसके साथ घूम रहा था उससे पूछताछ कर रहे हैं उसी के। In Jammu, the Vishwa Hindu Parishad conducted a Shastra Pujan ceremony on the occasion of Vijayadashami, marking a significant celebration of cultural and spiritual heritage. Devotees gathered to honor various weapons, symbolizing strength and the victory of good over evil. The ceremony includes traditional rituals, chanting of sacred mantras, and the adornment of the weapons, reinforcing the values of bravery and righteousness. Participants expressed their commitment to upholding Dharma, fostering unity within the community, and celebrating the rich traditions of Hinduism. This observance not only highlighted the festival's cultural importance but also served as a reminder of enduring spirit of resilience in challenging times. समझाने के तरीके सब विफल हो गए और करना पड़ा और उसके बाद माता सीता का जो हरण हुआ था माता सीता को ससम्मान शस्त्रों के प्रयोग से वापस लाया गया। तो तब से मद्देनजर आज आत्मरक्षा के लिए, देश के सम्मान की रक्षा के लिए, समाज के सम्मान की रक्षा के लिए जहां शस्त्रों की उपयोगिता हो, जहां उसकी जरूरत हो, उसका इस्तेमाल करने का प्रण और शस्त्र पूजन के अवसर पर मैं इन सभी कार्यकर्ताओं को भी बहुत बधाई देता हूं और समस्त राष्ट्रवादी समाज को, समस्त सनातनी समाज को बहुत श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल जारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो
पूजा की जाती है, इसका क्या महत्व और क्यों कहते हैं? सबसे पहले तो बुराई पर अच्छाई की जीत के इस पर्व की आपके माध्यम से सारे राष्ट्रवादी समाज को, सारे सनातनी समाज को बहुत बहुत बधाई। और आप जानते हैं कि जैसे भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए जब शांति के सारे प्रयास विफल हो गए तो शस्त्रों का प्रयोग किया। तो ये शास्त्रोचित है कि जब अधर्म जो है वो शांति से ना माने तो उस वक्त शस्त्रों का प्रयोग करना ही पड़ता है। और धर्म सम्मत शस्त्रों का प्रयोग हमारे सभी जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उसमें जायज ठहराया गया है। हमारी संत परंपराएं बहुत सारी ऐसी हैं जो शुरू से शस्त्रों को धारण करती आई हैं, और जैसे माला और भाला दोनों उनके पास हैं। हमारे जितने देवी देवता हैं, जब भी आप उनके जो स्वरूप देखते हैं तो उनके हाथों में भी शस्त्र हैं। तो शस्त्र एक सनातनी समाज का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन उसके साथ साथ शस्त्र और संयम का भी बहुत रिश्ता है कि शस्त्र संयम। Keshav Mahato Kamlesh, the president of the Jharkhand Congress Ranchi, spoke about Chief Minister Hemant Soren's recent meeting with Congress leaders regarding seat sharing for the upcoming elections. Kamlesh emphasized the importance of collaboration between the parties to ensure a unified front against their political opponents. He highlighted that discussions focused on strategizing and identifying constituencies where the alliance could gain a competitive edge. The meeting reflects a shared commitment to strengthen their political alliance and work together for the betterment of Jharkhand with an aim to address key issues affecting the state's residents. Kamlesh expressed optimism about the outcome of these discussions and the potential for a successful partnership in the electoral battle ahead. पहले कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व से मिले, क्या लेकर दिल्ली से आ रहे हैं, कितना सीट अभी और समय लगेगा उसके लिए। फिर आपस में गठबंधन के सभी साथी लोग बात करेंगे, उसके बाद ही इसका फाइनल होगा। कितना समय? अभी समय लगेगा थोड़ा, डिक्लेयर होने दीजिए, आचार संहिता लगने दीजिए, उसके बाद बहुत जल्दी मतलब आपस में बैठ के गठबंधन के साथ ही सीट शेयरिंग का अंतिम निर्णय लेंगे। अच्छा, कांग्रेस जो आत्ममंथन की है, कांग्रेस क्या क्या ताकत है, कितने सीटों की दावेदारी है? ये सारी बातों का फैसला गठबंधन की बैठक में ही होगा। अभी हमने जो 26 अगस्त से लेकर 24 सितंबर तक जो संवाद कार्यक्रम विभिन्न जिलों में चलाया और 30 तारीख को जनसंवाद कार्यक्रम लक्ष्य 2024 के तहत जो हम लोगों ने कार्यक्रम किया, साथ ही साथ 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म दिवस, लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस और हमारे यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी रहे उस दिन सोमा टाना भगत के जन्म दिवस पर जो चान्हो में सभा हुई, महात्मा गांधी के बहुत ही प्रिय जन थे हमारे यहाँ के टाना भगत। तो सोमा टाना भगत जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी जयंती के अवसर पर हम लोगों ने विशाल कार्यक्रम किया था और पूरे प्रदेश में हमारे वरीय नेताओं के साथ विभिन्न प्रमंडलों में ये जन संवाद कार्यक्रम लक्ष्य 2024 चलाया। ये सारे बातों से, संगठन की अद्यतन स्थिति से और गत 2000 चुनाव में हम लोग किस तरह लड़े थे, कहाँ हम लोगों को सफलता मिली, कहाँ नहीं मिली, और हमारे जो सहयोगी साथी हैं कहाँ कहाँ उनकी जीत हुई, कहाँ कहाँ उनको मतलब असफल रहे, सारे बिंदुओं पर हम लोगों को विस्तार पूर्वक बात हुई है और आगे की रणनीति हम लोग गठबंधन की बैठक में तय करेंगे। हमारे प्रभारी अभी तिथि निर्धारित नहीं की गई है, बहुत जल्दी हमारे प्रभारी भी रांची आएंगे और इन सारे बिंदु पर हम लोग बात करेंगे। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि ये सरकार काम नहीं कर रही, भ्रष्टाचार में ये सरकार जा रही है, जो आरोप बीजेपी के लोग गठबंधन सरकार पे ये तो जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ग्रहण किए, तब से ये लोग हर प्रकार से साम दाम दंड विभेद सारी नीतियों को लगा करके भी कुछ नहीं कर पाए। और जो जनकल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं हमारे गठबंधन सरकार से, वे लोग काफी हतोत्साहित हैं। मतलब पूरा झारखंड की 3.25 करोड़ जनता गठबंधन सरकार के साथ है और आगामी 2024 का चुनाव होगा
उसमें पूरी बहुमत के साथ गठबंधन की सरकार फिर आएगी झारखंड में। कमलेश जी, आपको दिल्ली बुलाया गया था या अपने मन से गए थे हेमंत सोरेन जी की मुलाकात नहीं। के बाद? मैं हमारे प्रभारी जी की जीत की खुशी में उन्हें बधाई देने गया था और उन्होंने बधाई देने के पश्चात मैं दिल्ली आया। उसी समय हमारे संगठन प्रभारी जो है माननीय वेणुगोपाल से मुलाकात हुई, उनसे काफी लंबी बातचीत हुई विभिन्न बिंदुओं पर। उसके बाद और बहुत सारे हमारे शीर्ष नेताओं से बात हुई। उसके बाद फिर मैं आज आपके बीच। पिछली बार से कम सीटों की चर्चा है, क्या स्वीकार होगा कांग्रेस? ये इस तरह की कोई बातें अभी नहीं है। जो भी तय होगा गठबंधन की बैठक में तय होगा। बड़े भाई की भूमिका में कौन होगा? बड़े भाई की भूमिका यहाँ माननीय जेएमएम के लोग हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं। आप तो बराबर देखते होंगे केंद्र में। बैकफुट कौन सी है? आपस में मिलजुल के लड़ना है, बैकफुट पर किया। The festival of Dasara or Vijayadashmi is being celebrated across the country, and Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav marked the occasion by performing a ceremonial puja. CM Yadav engaged in Havan Pujan, dedicating his prayers to the divine and seeking blessings for prosperity and harmony in the state. He concluded the worship with a traditional arti, reflecting the cultural significance for the festival, which symbolizes the victory of good over ill. His participation in the celebrations underscores the importance of this auspicious day in promoting unity and spiritual renewal among the people of Madhya Pradesh. युगों युगों से दशहरे का पर्व हम सबको हमारी सनातन संस्कृति से जोड़ता है और सच में ये आज शस्त्र पूजन करके दशहरा पूरा देश का सनातन धर्मी पूरा समाज मनाता है। कई कारणों से आज का महत्व है। आज खास करके हमारी स्वर्गीय राजमाता विजय राजा सिंधिया जी का भी जन्मोत्सव है। मैं उनको भी नम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनको स्मरण करता हूँ। जनसंघ के ज़माने से लेकर के आज तक राजमाता जी पूरे भाजपा के लिए एक विशेष स्थान रखती है। मातृ स्वरूप उनका स्वभाव, कोई पद की लालसा नहीं और अपने तन मन धन से पार्टी को खड़ा करने के लिए जो उनने अपना योगदान दिया है वो सदैव भाजपा और भाजपा वालों के मन में विशेष आदर का स्थान रखता है। ऐसी पुण्य श्लोक अहिल्या माता को भी स्मरण करना चाहूँगा, जिनकी 300वीं जयंती चल रही है। आज इसी अवसर पर हमने पूरे प्रदेश में दशहरा उत्सव उनके नाम पर मनाने का निर्णय किया है। जिनके शासन के सभी सूत्र जनता की सेवा के साथ साथ सशस्त्र बल में भी उनकी अपनी सीमा उल्लंघन के मसले का उनका उदाहरण है कि उनके राज्य पे कभी आक्रमण नहीं हुआ और सदैव उनने अपने राज्य के साथ साथ पूरे अखंड भारत की कल्पना करते हुए सभी प्रकार के सुशासन के सूत्र हाथ में लेकर के शासन चलाया। ऐसे पुण्य अहिल्या माता के लिए भी आज हमने दशहरा उनको समर्पित किया है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई। Retired Supreme Court Judge Justice Hima Kohli in Delhi addressed key issues regarding the online streaming of court proceedings and the representation of prominent female figures in the judiciary. She advocated for increased transparency in the legal system through online access, emphasizing that it would enhance public understanding of judicial processes. Additionally, Justice Kohli highlighted the importance of supporting women in the legal profession, calling for more visibility and recognition of their contributions. She also raised concerns about inadequate facilities, stressing the necessity for separate toilets for women in court complexes to ensure a more inclusive and accommodating environment. Her remarks underscored the ongoing efforts to promote gender equality and improve the accessibility of the judiciary for all. She went through the whole process. She did not come to the court till beyond 24 weeks.
And by the time they knocked at the door of the court, ideally they should have gone to the High Court. But the time was so short that we did not think it appropriate to waste more time. Every day was counting. And we wanted to explore the possibility of first asking the parents, particularly the wife, the mother, as to why she wanted to go that way. We also simultaneously directed, which we all do, that the matter be referred to a board of doctors, medical doctors, who would give their input from any government hospital and give an overall view of what their considerations are and what is their guidance. The first report that came before us was such that both my sister, Justice Nagaratna, and I felt that we could give permission and the child could be aborted because of the condition of the mother. But subsequently, within I think a couple of days, maybe one day, the matter was again mentioned before us by the central government, saying that there is another report that has been forwarded by the medical board constituted by us, and that report says that there is a life in the fetus completely healthy, and that it is now quite late and there could be circumstances where the court should reconsider the fact. We again virtually called in the mother on the screen because we didn't want to disturb her, and we had a hybrid mode of interacting with her while the counsel was physically present in court. The only reason the mother could offer, because the child the fetus was healthy. Of course, there was a heartbeat by then. It was a question of just delivering the child in a week or so. She at that time stated that she may not be able to, the father and the mother may not be able to keep the child with them. The state offered that if that happens, we will make sure that we take over the child and rear the child. So with all those assurances, and what weighed with me was that the child, the fetus was alive, and it was just a matter of a week or so, and the child would have been born, and it was a healthy fetus. That made me think that my judicial conscience did not permit, in such facts and circumstances, to permit the mother to go ahead with the abortion. Whereas my sister did not agree with me and felt differently. The matter was referred to a 3-judges bench later, which took the same view that I did, and ultimately the fetus was born. The mother was admitted at a government hospital, and the silver lining to this cloud was that later on I came to know that it was a bonny baby boy. So she had 2 sons earlier and another son, and the parents refused to part with the child. The child has remained in the family, though the court, at the instance of the court, the government did say that they're willing to take the child and give it out in adoption. The parents did not want it. So it all ended up well. But that is not to say that in other circumstances we would have taken a same view. It is a case-to-case situation. In the facts of this case, we felt like that. In the facts of another case, and we keep getting these cases in our judicial career very often, there have been so many cases where we have, and I myself with another colleague, had decided to permit the mother even at a later stage beyond 24 weeks. But we must keep in mind that the legislature has laid down laws. Tarun Chugh, the National General Secretary of the BJP, responded to recent statements made by Uddhav Thackeray and AIMIM Chief Asaduddin Owaisi in Amritsar. Chugh criticized the remarks, asserting that they reflect a divisive political agenda that undermines national unity. He further emphasized the BJP's commitment to promoting inclusivity and harmony among different communities. Chugh urged political leaders to focus on constructive dialogue and development rather than engaging in rhetoric that could polarize the electorate. His comments highlight the BJP's stance on fostering a cohesive environment in the face of differing political narratives as the party continues to prepare for upcoming electoral challenges. सर ओवैसी ने कहा है कि हम साथ नहीं होंगे तो कांग्रेस चुनाव में जीत सकती है, मोदी जी नहीं जीत सकती।
कांग्रेस पार्टी की बी टीम की भूमिका उद्धव सेना और अवैसी सेना मिलके कर रहे हैं। पूज्य बाला साहब ठाकरे के विचारों को त्याग कर अब कांग्रेस और उद्धव ठाकरे ने ओवैसी के विचारों को अपना विचार बना लिया है। ओवैसी के इशारों पर अब महाराष्ट्र चुनाव की तैयारी हो रही है। सर, हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद दोबारा से फिर उन्होंने ईवीएम का अगर आपने शुरू किया ईवीएम को दूसरे जहां तो जीत जाओ, कर्नाटका में सरकार आए तो चुनाव योग और ईवीएम ठीक, तेलंगाना में सरकार आए तो चुनाव जीत जाओ तो ईवीएम और इलेक्शन आयोग ठीक, लेकिन हरियाणा में जनता करारा जवाब दे तो ठीक रहा ईवीएम पर। सच तो यह है कि पिछले 2 दशकों से कांग्रेस पार्टी विवेकहीन राहुल गांधी के नेतृत्व को पाल रही है, जो कभी In Ayodhya, the Dussera festival celebrated with great fervor, attracting thousands of devotees and tourists to witness the vibrant festivities. The highlight of the celebration was the traditional Ram Leela, a dramatic performance depicting the epic tale of Lord Rama's victory over Ravana. Talented artists brought this story to life with captivating acting, colorful costumes and spirited dialogues, engaging the audience in the timeless narrative of good triumphing over evil. The atmosphere was filled with joy and devotion as families gathered to celebrate the occasion, reflecting the cultural richness and spiritual significance of Ayodhya. The event not only commemorated the victory of righteousness, but also reinforced the importance of unity and faith within the community. मैं जय श्री राम। मैं यही पहले तो देशवासियों को मैं दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं कहना चाहूँगा। आज बुराई पे अच्छाई की जीत हुई है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होता है आज का, क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम जी ने रावण का वध कर अच्छाई पे जीत प्राप्त करी थी। तो सबसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, बहुत खुशी हुई है। उनके छोटे भाई लक्ष्मण का किरदार में निभा रहा था। मेरे साथ पवन संकट हनुमान है, जिनके बिना ये लीला हो ही नहीं सकती थी। इनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। मेरा नाम अनिमेश मिटा और मैं नोएडा से हूँ। जय श्री राम। सभी देशवासियों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। आज रावण मार दिया गया श्री राम प्रभु के हाथों, और मैं उनका सेवक हनुमान के किरदार में भूमिका निभा रहा हूं। बहुत ही ऐसा अनुभव हो रहा है, मतलब मुझे वो लगातार मैं पिछले 4-5 दिनों से कैरेक्टर्स कर रहा हूं। भरत का किरदार किया, सुग्रीव का किरदार किया, और ये हनुमान जी के किरदार में तो मुझे वो शक्ति मिली है कि मतलब मैं ये एहसास आप सभी को बता नहीं सकता। अयोध्या की रामलीला अयोध्या में आके हम कर रहे हैं, हमारा सौभाग्य है और बहुत ही खुशी मिल रही है। मेरा नाम है दिव्यांश शर्मा, मैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर से ही हूँ। Well, that's a wrap for Inside India. Stay tuned to CVR English News.